Welcome to my channel, my dear friends. I am Dr. T.C. Paul. We are going to learn now U.P.S.C. main lessons, that is 16. Neolithic and chalcolithic age, the beginning of agriculture. When we talk about Neolithic, that we talk about new Stone Age, and chalcolithic is when to talk about other age. I should talk about this Neolithic and chalcolithic age. That is nothing but the beginning of agricultural stage of the ancient India. Transition to agriculture, which showed a pivotal shift, and it is primarily associated with the Neolithic period, also known as the New Stone Age. Right. Let us learn that 4 points are given for the main characters of Neolithic Revolution. When you talk about Neolithic Revolution, then you talk about domestication of plants and animals. Second, settled life. That third is technical advancements, and fourth is pottery. Let me explain about the domestication of plants and animals. This is the cornerstone of Neolithic Revolution, right? The early cultivation of crops like wheat and barley, especially two items are mentioned here during that time for domestication of plants and agriculture or animals, that wheat and barley, and domestication of animals like sheep, goat and cattle. When talk about animals, then you talk about sheep, goats and cattle, right? When you talk about cultivation, you talk about crops like wheat and barley, right? That is talking about crops. And talking about animals, then we say about sheep, goats and cattle. Number 2 point, settle life by the producement of food through agricultural activities that allowed for the development of permanent settlements during that time, and moved the nomadic lifestyle. Nomadic means moving one place to another place. So that styles were moved away. Number third is technical advancements, that Neolithic period show the advancement of tools making included the polished stone tools. Polished stone tools. Remember, polished stone tools that found as technical advancements for farming. And pottery last for number 4, pottery. Through this invention, it widespread the various purposes like food storage and cooking. Once again I repeat that main characteristics of Neolithic Revolution. First one is the domestication of plants and animals. When I talk about that crops, then wheat and barley are the important that was advanced, and then secondly the animals like sheep, cattle and goats. And we're talking about the settled life, that because of the nomadic lifestyles were moved away during that time because of the agricultural development. Third is technical advancement, that is polished stone tools, and number 4, pottery, that for the purpose of food storage and cooking invented that pottery. And when you talk about prehistory and proto-history during that Neolithic Revolution, prehistory means period before the written records. Proto-history means during the time of the written records and oral traditions, right? Let me talk about this topic in Hindi little bit for understanding for the Hindi speaking people. Transition, Neolithic means Navabhashan Kal, and Chalcolithic means Tamra Kal, the beginning of agriculture का कृषि का शुरुआती समय, यही समय में हुआ था. ट्रांजिशन, ये संक्रामण जो शुरू
एक पार्ट से दूसरा पार्ट में बदलने को वो ट्रांजिशन बोलता है टू एग्रीकल्चर कृषि में ये चेंज हुआ, बदल हुआ, which showed a pivotal shift। उसमें एक दिखाया था एक केंद्रीय बदलाव, शिफ्ट मतलब बदलाव, एंड इट इज़ प्राइमरली एसोसिएटेड, ये प्राथमिक जो एसोसिएटेड होता है, संबंधित जो है, जो जुड़ा हुआ है, संबंधित एसोसिएटेड में जुड़ा हुआ है विद द न्यूलिथिक पीरियड। उस पीरियड में, न्यूलिथिक पीरियड में ऑल्सो नोन एज इसको नया स्टोन एज भी बताया जाता है, नया पत्थर काल। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, उसमें जो विशिष्टता है न्यूलिथिक रेवोल्यूशन का, न्यूलिथिक क्रांति का, जिसमें डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें पौधे का और जानवर का डोमेस्टिकेशन करना, मीन्स घर में पोसा गया था। दिस इज़ द कॉर्नरस्टोन, यही आधारशिला रखा है जो न्यूलिथिक रेवोल्यूशन का, न्यूलिथिक क्रांति का। द अर्ली कल्टीवेशन जो है, जो पहला जो कल्टीवेशन खेती जो शुरुआती था, फसल थे, उनमें से गेहूँ था, जौ था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स लाइक, उसमें भेड़े और बकरी और पशु भी था। सेकंड में सेटल लाइफ जो हुआ, स्थिर जो जिंदगी है, इसका शुरुआत हुआ जो बाय द प्रोड्यूसमेंट ऑफ फूड, जिसमें प्राप्ति के साथ में फूड थ्रू एग्रीकल्चर कृषि में प्राप्ति के साथ में जो बाय द डेवलपमेंट ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट्स, इसमें स्थायी बसेरा बनाने के लिए शुरुआत हुआ था। और उसी समय में घुमा हुआ ज़िंदगी को हटाया गया अपना से। टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ, तकनीकी जो उन्नति हुआ वो देखा गया उस समय में। इसमें जो पॉलिश स्टोन टूल्स, इसमें चिकना जो पत्थर का जो टूल्स था वो फार्मिंग के लिए लगाया गया था। पॉटरी, मिट्टी का बर्तन इन्वेंशन हुआ, जिसमें खाना स्टोरेज रखने के लिए और खाना बनाने के लिए बनाया गया था। और प्री हिस्ट्री का मतलब होता है रिटन रिकॉर्ड्स का पहले, और प्रोटो हिस्ट्री का मतलब होता है रिटन रिकॉर्ड्स से और मुंह से जो उस परंपरा है उसको बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।